हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सीखेंगे डेज नेम वॉल हैंगिंग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्विक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा ये जो वॉल हैंगिंग है वो बेस्ड है उस सीनरी पे जो हमने कभी ना कभी बचपन में ज़रूर बनाई होगी, जिसमें हम बनाते थे ना वो एक घर और उसके आगे जाता हुआ पाथ और साइड में ट्रीज, रेनबो, क्लाउड्स। तो उसी पे बेस्ड है मेरी ये वॉल हैंगिंग। ऐसी ही सीनरी से इंस्पायर है मेरी ये वॉल हैंगिंग, जिसके अंदर एक हाउस है और 7 पेबल्स हैं, जिसके अंदर हम अपने डेज के नाम लिखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये घर बनाने के लिए मैंने 3 शीट यूज की, ग्रीन, रेड और बहुत ही लाइट ब्लू। सबसे पहले मैंने ग्रीन शीट ली और उसे एक पेंटागन शेप में काट लिया। कटने के बाद मेरी शेप कुछ ऐसे दिख रही थी और उसके बाद मैंने 2 स्ट्रॉ लिए और उन्हें ऐसे चिपका लिया। और इस तरह हमारे घर की 3D रूफटॉप भी रेडी हो गई। स्ट्रॉ लगाने के बाद मैंने रेड शीट को ट्रायंगल में काटा और उसे पेस्ट कर लिया। घर का डोर बनाने के लिए हम रेड शीट को रेक्टेंगल में काटेंगे, ब्लू शीट लेकर उस पे घर के गेट के लिए ग्लास बनाएंगे। और जब आप ये कर लेंगे तो आपका डोर भी कुछ ऐसे दिखेगा। बाकी शेप्स की तरह इस डोर को भी पेस्ट कर लें। अब मैं ब्लैक पेन यूज कर अपने रूफ टॉप में ब्रिक्स बना रही हूँ। अब हम ब्लू शीट में से 2 स्क्वायर्स निकालेंगे और उन स्क्वायर से हम विंडो बनाएंगे। We'll go
sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns एंड वंस वी आर डन तो हमारा घर कुछ ऐसे दिखेगा। we'll go. घर के बन जाने के बाद हम इस पर एक कार्डबोर्ड पीछे से चिपका देंगे ताकि हमारे वॉल हैंगिंग को एक बेस मिल जाए। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever अब 7 पेबल बनाने के लिए हम कार्डबोर्ड काटेंगे रेक्टेंगल शेप में। waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. एक एक रेक्टेंगल लेकर हम उसे ऐसे एक रफ सी शेप दे देंगे जैसे कि कोई स्टोन हो। मेरे पेबल काटने के बाद कुछ ऐसे दिख रहे हैं। इसके बाद मैंने एक शीट ली, आप कोई भी कलर की ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, मैंने ये वाली ली है। इसके बाद मैंने जो पेबल्स काटे थे, जो कार्डबोर्ड काटा था पेबल की शेप में, उसे इस शीट पर चिपका लिया। उसके बाद इस शीट को अलोंग द साइड ऑफ द कार्डबोर्ड मैंने काट लिया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने कैसे काटा है। These walls fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. इस पेबल की तरह बाकी 6 पेबल भी हम रेडी कर लेंगे और उनके ऊपर हम डेज के नाम लिख देंगे। मैं यहाँ आपको थर्सडे लिखकर दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पर वाइट पेंट यूज़ किया है, आप चाहें तो आप मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो आप वाइटनर या करेक्शन पेन भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने पेंट यूज़ किया। In number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.
The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And look at this, how satisfying do they look. हमने सातों के सातों दिन इस पर लिख लिए। अब इन्हें असेंबल करने के लिए मैंने दो चीज़ों का यूज़ किया, सूतली विच इज़ अ वेरी फाइन रोप और टेप। लास्ट में मैंने इस रोप के नॉट्स बना दिए, which looks cute, right? वॉल हैंगिंग की हेडिंग बनाने के लिए मैंने बाकी शेप्स की तरह एक रेक्टेंगल काटा और उस पर डेज नेम लिख दिया। मैं फिर से यहाँ पेंट यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो करेक्शन पेन, मार्कर या और जो भी आप कुछ चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। And now revealing the final look. जब ये पूरी तरह बन गया, I was so obsessed. मैं इसे देखे जा रही थी। तो अगर आपने ये बनाया है मेरी वीडियो की हेल्प से और आपको भी ये पसंद आया तो do let me know in the comment box. Thank you so much for watching my video till last. Don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel.